Hello and welcome back. The new year has started, so wish you all a very happy new year. The prelims pressure will slowly start to mount. Some of us might have already started to feel that. Even various strategy videos have started to surface on YouTube. Prelims test series of various coaching institute will be starting soon. So जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, this will create a kind of a FOMO in their mind. जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर अर्ली टाइम ऑफ प्रिपरेशन है, can start with prelims thoroughly. We are doing science and tech for mains 2026. Nanotechnology and biotechnology we had completed along with PYQs. Issues relating to IPR कि हमने just PYQs पढ़े थे. Today we'll be completing them, but at the end of the video. So we'll be starting with a fresh topic today, which is awareness in the field of IT, space, computer and robotics. So by the end of this video, we will have covered issues relating to IPR. Then nanotechnology and biotechnology we had already covered in previous videos. And then awareness in the field of IT, space, computer and robotics. Then achievement of Indians in science and technology. Then we will be left with science and technology, development and their applications in everyday life, and Indianization of technology and developing new technology. So let us start. Awareness in the fields of IT, space, computer and robotics. Now इसके अंदर ये हेडिंग्स आते हैं: क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IoT, AI, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, डीपफेक्स, supercomputers, 3D printing and 4D printing. देन स्पेस में बहुत चीज़ें करंट बेस्ड हो जाती हैं, तो स्टैटिक पार्ट तो हम कवर कर लेंगे, बट करंट जो पोर्शन है, जैसे ये टॉपिक्स इस बार के मेंस 365 में दिए हुए थे: प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन स्पेस सेक्टर, एक्सियोम 4 मिशन, देन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, दिस वॉज ऑल इन द न्यूज़. देन स्क्रैमजेट इंजन, क्रायोजेनिक इंजन, then Aditya L1 was in news, then Navik, and you can see likewise black holes, then meteorite अभी तक PYQs में नहीं आया है, एस्टेरॉयड आया है, सो meteorite भी न्यूज़ में काफ़ी रहता है तो आ सकता है. then geomagnetic storms. नाउ स्पेस वाले सेगमेंट का स्टैटिक पार्ट हम कवर करेंगे, एंड जो भी करंट बेस्ड रहेगा वो मैं मेन 365 से करूँगा, एंड आपको जो सोर्स फॉलो करना है आप वहाँ से कर सकते हैं. So we will start with quantum science and technology. United Nations designated 2025 to be the International Year of Quantum Science and Tech. Now what is quantum computing? It is a type of computation that harnesses the collective properties of quantum states such as superposition and entanglement to perform calculations. What are the example of quantum chips? जैसे कि Microsoft का Majorna है, Google का Willow है. The key principles involved in quantum science are superposition. Now what is superposition? It is the ability of quantum particle to be in multiple states at the same time. Then entanglement. Entanglement का मतलब होता है two particles become linked so that their states are dependent on each other. Then interference. Particles can be in more than one place at once, and they can cross their own trajectory to interfere with their path. Then coherence, the ability of a quantum system to maintain a well-defined phase relationship between different states. So this is called coherence. So these are the key principles involved in quantum technology. Now quantum computing and classical computing के बीच में differences क्या हैं? So quantum computing calculates with qubits which can represent 0 or 1 simultaneously, which is also called superposition. And classical computing में क्या है कि at one time it can either be 1 or 0. So comparatively क्या हो गया, slow हो गया quantum computing से. Then quantum computing में power increases exponentially in proportion to number of qubits, and इसमें power बढ़ती है 1:1 relationship में. Then quantum computing may have high error rates because of maybe due to entanglement and interference, and classical computing have low error rates. Then quantum computing may need to be kept at ultra cold temperature, and classical computers can even operate at room temperature. Then
टास्क लाइक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, डेटा एनालिसिस एंड सिमुलेशन, ये हम परफॉर्म करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग से. देन जो एवरीडे प्रोसेसिंग होती है, छोटे मोटे काम होते हैं, दैट कैन बी डन विद क्लासिकल कंप्यूटर एज वेल. नाउ व्हाट आर द की एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सो की एप्लीकेशंस क्या हो गए इसके? हेल्थ में एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोसिस, देन क्वांटम केमिस्ट्री फॉर डेवलपिंग न्यू वैक्सीन्स एंड ड्रग्स. Then communication, this includes QKD. QKD is quantum key distribution. It is a secure communication method for exchanging encryption keys only known between the shared parties. So this can be used by military. Now Quest was China's quantum science satellite, which was sent in space in 2016 to test the quantum communication. Then sensing and meteorology, prediction models, climate change models, measurement of forces and gravitation, electric fields. Then research में for example Genome India and CERN. Then agriculture में rainfall patterns and precision farming में भी quantum computing use हो सकती है. Materials and devices also, for example design and synthesis of quantum chips, जो हमने examples देखे Majorna, Willow and ये कुछ और applications हैं, आप देख सकते हैं. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में इसका बहुत बड़ा काम आएगा, टू एनालाइज बिग डेटा एंड AI, पावरिंग AI. दैन डिजास्टर मैनेजमेंट में डेटा कलेक्शन एंड प्रोडिक्शन. नाउ कम्स द चैलेंजेस. पहला है लैक ऑफ रेगुलेशन. देर आर नो क्लियर स्टैंडर्ड्स फॉर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन, सो दिस इज़ अ मेजर चैलेंज. Then high infrastructure cost, advanced lab and equipments need heavy investment and upgrades. Scalability issues क्या हैं? Difficult to scale quantum system while maintaining coherence and low error. Then it needs extreme cooling. We all have read that qubits require near absolute zero temperatures to function. Then low R&D spending है. In India, only 0.64% of GDP is spent on R&D, and private sector also lags in investment. Then there are technology gaps, need for new quantum scientific programming in languages, compilers and tools. So these are the challenges. Then what are India's initiatives? First is National Quantum Mission 2023. This aims to create a vibrant and innovative ecosystem in quantum technology. Then Quest is Quantum Enabled Science and Technology. This is a research program to build quantum capabilities. Then QCAL is Quantum Computing Applications Lab. This was established to accelerate quantum computing-led research. Then what are the other initiatives? For example, NMQTA. What is NMQTA? It is National Mission on Quantum Technologies and Applications. Then Quantum Computer Simulator Toolkit and Quantum Frontier Mission. So these were some India's initiatives. Then way forward क्या है? Encourage private investment. So we can use like tax breaks and grants and public-private partnerships to attract companies. Then develop regional infrastructure, that is build research facilities across India for wider participation. Then create regulatory bodies, set up a central authority to govern quantum technology because it can be used for harmful purposes also. Then enable tech transfer. इसका एग्जांपल हमने नैनोटेक एंड बायोटेक में देखा है, जैसे कि एकेडमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस. देन स्ट्रेंथन IPR फ्रेमवर्क. IPR आज हम अच्छे से करने वाले हैं वीडियो के एंड में. देन ये कुछ सेंटेंसेस हैं विच कैन बी यूज्ड इन कंक्लूजन. फॉर एग्जांपल, प्रायोरिटाइजिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस सच एज एडवांस्ड ड्रग डिस्कवरी, प्रिसिजन नेविगेशन can ensure quantum technology addresses critical societal and economic needs. Now comes IoT. What is IoT? IoT is Internet of Things. It refers to a network of physical devices that are embedded with sensors, softwares, and network connectivity, allowing them to collect and share data. So it is a part of larger IR 4.0. IR 4.0 is Industrial Revolution 4.0 that seeks the digital transformation by new technologies such as AI, additive manufacturing, augmented virtual reality. Additive manufacturing is 3D that we'll see later. Then applications क्या हैं इसके? सबसे पहला है हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग,
and wearable devices, for example Fitbit, Apple Watch. It can be used for telemedicine also. Then एग्रीकल्चर, इसमें फसल करके एक स्टार्टअप है बेंगलुरु बेस्ड दैट प्रोवाइड्स IoT बेस्ड प्रेसिजन फार्मिंग सॉल्यूशंस फॉर हॉर्टिकल्चर. देन ट्रांसपोर्टेशन में कैसे काम आएगा, सो इसमें स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम्स हो गए. देन टोल कलेक्शन में फास्ट टैग हमने सुना हुआ है. एंड एनर्जीज एंड यूटिलिटीज़ में कैसे काम आएगा, सो एनर्जी यूसेज ऑप्टिमाइजेशन, फॉर एग्जांपल इंडिया स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम. देन व्हाट आर द इनिशिएटिव्स, so initiatives are smart cities mission में uses IoT for transport, water supply and solid waste management. Then Center of Excellence for IoT, it is Digital India's initiative led by METI and NASCOM. Then NMICPS is National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems, uses domains like AI, robotics, IoT. It aims to converge all stakeholders, for example academia, industry, government and international organization. Then Samarth Udyog Bharat 4.0, इसमें basically it promotes smart manufacturing including IoT. Then Global Standards Initiative on IoT by ITU. Then what are the challenges? Challenges are security and privacy issue रहेगा, which is like for example smart healthcare devices and smart meters risk patient or user data leaks. Then data overload, IoT devices generate vast amount of data. Then power consumption बहुत ज़्यादा रहता है इसमें. They require frequent charging, creating problems in remote off-grid locations. Then non-interoperability due to diverse range of devices, protocols and platform involved. Then environmental risk क्या है, they can generate lot of e-waste. Then way forward हम कैसे लिख सकते हैं, for example expand BharatNet to reach remote farms, enabling IoT in agriculture. Then managing data effectively. Then encourage startups through funding and incubation. Then create national IoT standards for device compatibility, security and data exchange. Now we will see robotic technology. So India ranks 7th in annual robot installation worldwide according to World Robotics Report 2024. Then applications क्या हैं इसकी, एजुकेशन में मानव इज़ इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. देन हेल्थ केयर में इंडियाज़ इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम विच इज़ कॉल्ड SSI मंत्रा. देन इन एग्रीकल्चर, इसमें टार्टन सेंस करके एग्जाम्पल है, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर, इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रिसिजन स्प्रेइंग, वीड डिटेक्शन एंड क्रॉप मॉनिटरिंग. देन स्पेस एक्सप्लोरेशन में व्योम मित्रा एक ह्यूमनॉइड रोबोट है विच इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो. देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी में दक्ष करके है, इट्स अ ROV इज़ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल डेवलप्ड बाय DRDO. देन इनिशिएटिव्स क्या हैं, ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन रोबोटिक्स 2023. इट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट. Then Artificial Intelligence and Robotics Technology Park, that is Art Park in IISc Bangalore. Then what is CAMRAS? Center for Advanced Manufacturing for Robotics and Autonomous System. Challenges क्या हैं, high cost, common से, for example agricultural robot, they remain out of reach for small and marginal farmers due to high cost. Then limited governance mechanism. Then लो R&D, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था. सो वी लैग फार बिहाइंड जापान, USA एंड साउथ कोरिया इन पेटेंट्स एंड ब्रेक थ्रूज इन रोबोटिक्स. देन लिमिटेड एक्सेस टू डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़. देन देर आर एथिकल कंसिडरेशन ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल इशूज़ लाइक जॉब डिस्प्लेसमेंट, डेटा सिक्योरिटी एंड पोटेंशियल मिसयूज ऑफ रोबोट्स. देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, फॉर्मुलेट अ नेशनल रोबोटिक्स पॉलिसी to provide clear direction and standards and incentives. Then robotic clusters could be developed similar to electronics manufacturing clusters. Then we can reimagine robotic intelligence with a focus on autonomy, adaptability and evolution rather than just pre-programmed tasks. And we can also undertake exploratory research. Next is blockchain technology. Blockchain is a decentralized distributed ledger technology
to securely record data and transactions over a peer-to-peer network. Then इसके applications क्या हैं? First is cryptocurrency, for example Bitcoin, Ethereum. They all have features like decentralization, limited supply and borderless transaction, which are offered by blockchain technology. Then supply chain management. For example, Coffee Board of India uses blockchain to trace coffee production. Then voting systems. India has developed a remote voting system that enables encrypted vote for migrant voters. Then intellectual property protection. For example, Resonance IP project. So in collaboration with WIPO, uses blockchain to protect music IP rights. Then record management. Blockchain based EHR. EHR is electronic health records for patients data security. Then strategic application क्या है? For example, strategic crypto reserve by USA. Then initiatives क्या है? National strategy on blockchain to create trusted digital platform through shared blockchain infrastructure. Then future skills prime for upskilling in blockchain. Then WEF, that is World Economic Forum's Presidio principles for designing blockchain applications. Then Center of Excellence in Blockchain, which is by METI and NASCOM. The National Blockchain Technology Stack, which offers BaaS. BaaS is Blockchain as a Service, is a part of broader National Blockchain Framework, that is NBF. Then challenges क्या है? Non-interoperability. Different blockchain platforms are often incompatible with each other. Then storage, they demand heavy storage, as data stored is replicated at all the nodes and becomes perpetual. Then energy consumption बहुत ज़्यादा होता है. Some blockchain models like proof of work, they consume excessive electricity and computing power, and it further escalates with need for the systems to be kept cool to function. Then lack of skilled workforce. Despite initiatives like Kerala Blockchain Academy, demand far exceeds the supply of talent. Then legal, although Section 43A of IT Act 2000 provides for compensation for failure to protect data, but does not have safeguard from perspective of the blockchain. Then way forward क्या हो गया इसका? Then next is AI. AI enables computers to simulate human intelligence and problem solving capabilities. AI is expected to raise India's annual growth rate by 1.3% by 2035 and can add $1 trillion to India's economy by 2035. This is a report by Niti Aayog. So we can quote this. Then applications क्या है? Generative AI to create original content such as text, images, videos, audios, etc. Then educational use क्या है? For example, AI-driven OMR systems in entrance exam. Then manufacturing में Tata Steels uses AI-driven predictive maintenance to monitor equipment health. Then in energy, NTPC uses AI for solar and wind energy forecasting to optimize power generation. In agriculture में use of AgriBot for weather forecast, smart drones and farming data. Then initiatives में India AI Mission. It is a comprehensive national level program to democratize and catalyze the AI innovation ecosystem through PPP, that is public-private partnership. Then National AI Portal and Aravat. Aravat is AI research analytics and knowledge dissemination platform. It provides a common compute platform for AI research. Then Bharat Gen program. It is focused on creating generative AI systems in various Indian languages. The National AI Skilling Program, as the name itself suggests, it is focused on enhancing AI skills through customized training modules. Then challenges क्या हैं? Data privacy and security, ethical issues. For example, biased AI models can make decisions that unfairly target or exclude certain groups. Then lack of transparency. Internal workings of AI-based models are not known by users, so they are considered as black boxes. Then infringing intellectual property rights. Many artists have claimed that their artworks were recreated by AI.
Then accountability is of course an issue. For instance, who will be held liable in case of accident of a self-driving car? Then these are the way forward. Then AI governance. So there are 8 principles for AI governance: transparency, accountability, safety, reliability, robustness. You can see. And then what are the India's initiative for taken to regulate AI? So there is a national strategy for AI, that is Niti Aayog's AI for all. Then responsible AI principles, again by Niti Aayog's. There are guidelines that emphasize ethics and accountability with actionable steps. Then Bletchley Declaration 2023, India is a signatory. Then New Delhi Declaration 2023, which is also known as Global Partnership on AI Ministerial Declaration. Then Hiroshima AI Process by G7. Then European Artificial Intelligence Act that follows a risk-based approach and prohibits certain practices wherein AI violates ethics and safety norms. Then this is AI in healthcare. If a specific question comes, you can pause the video and have a look. Then this is AI and agriculture. You can again pause and have a look. These are very simple points. Deepfakes. Recently, US enacted Take It Down Act to tackle harmful deepfakes online. So technology used is deep learning, which is a subset of machine learning. It involves replacing faces, manipulating facial expressions, synthesizing speech, appearing to say or do things not actually done. So देख लेते हैं इंडिया में रेगुलेशन क्या है. IT Act 2000 है. It is applicable to information generated using AI tools. Then there are IT Rules 2021, provides grievance appellate committees for victims to appeal online. Then CERT-in operates Cyber Swaksh Kendra. Then I4C is Indian Cybercrime Coordination Center. Then National Cybercrime Reporting Portal. So there is a toll-free number which is 91930. Then what are the global steps? For example, European Union's AI Act. Then Italy, there is a provision to prohibit the unauthorized use of a person's likeness. Then concerns, we all know, national security risk, erodes trust in democracy. It often victimizes women. So for example, approximately 90% of deepfake videos since 2018 have been non-consensual pornography. Then cyberbullying, then identity theft, and there's costly computation because detecting videos requires huge investment in computing resources and data handling. Then way forward, enhanced regulation, we can take proactive actions, not just post incident responses. Then technological advancement कर सकते हैं. For example, MIT created Detect Fakes website to help people identify deepfakes by focusing on small intricate details. Then cyber literacy. Now let's see big data. India has joined the UN Committee of Experts on Big Data and Data Science for Official Statistics, UNCBD. So big data क्या होता है? Data whose scale, diversity and complexity requires new architecture, techniques, algorithms and analytics to manage it and extract value and hidden knowledge from it. So इंडिया में इनिशिएटिव्स क्या हैं? सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है एंड नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है. देन एप्लीकेशंस में क्या है? लॉजिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल स्विगी इन इंडिया leverages big data to assign delivery partners the shortest and the most efficient routes. Then marketing and advertising. For example, Netflix and Amazon use big data to drive personalization and customer satisfaction. Then smart cities में resource management, improved infrastructure planning and AI driven solutions to urban challenges. Then education में personalized training, improving educational quality. So likewise it is used. And earth sciences में climate and earth studies, weather modeling and prediction. Then challenges क्या हैं? Managing massive data, because data is in petabytes and exabytes. So जो traditional storage हैं, they can't handle petabytes or exabytes of data. Then handling diverse data types, for example integrating
structured, semi-structured, and unstructured data is complex. Then challenges of processing: fast data streams from IoT, social media, etc. need immediate processing. Then security and privacy issues भी हैं. Then data analytics, extracting insights. There is also shortage of skilled data scientists. Then these sentences can be mentioned in the conclusion part. Then supercomputers. Supercomputers, you can pause the video and see. These are very simple points. But we will see National Supercomputing Mission. National Supercomputing Mission was launched in 2015. Its objective was to make India one of the world leaders in supercomputing. It was jointly steered by Department of Science and Technology and METI. Then it envisages installing networks of supercomputers with cumulative capacity of 45 petaflops. So जो supercomputer की performance होती है, that is measured in flops, point operations per second. And second is connecting these supercomputers on national supercomputing grid, which connects academic institutions and R&D labs. Then third point है इसका development of highly professional, high performance, computing aware human resource. So ये जो 3 जगह मैंने मेंशन कर रखी हैं, NSM envisages, इसमें ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे. Now 3D printing technology, इसको पॉज करके, and I have written examples also, so you can see. Then 4D में देखते हैं. What is 4D? Basically, Indian researchers developed 4D printed artificial blood vessels for advanced medical graft. It basically evolves from 3D printing only by adding dimension of time. Objects can change shape or function over time in response to environmental stimuli such as heat, light or moisture, etc. इसके एडवांटेजेस क्या हो गए? डायनेमिक फंक्शनैलिटी है, मटेरियल एफिशिएंसी है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन फैब्रिकेशन है. फॉर एग्जांपल स्टीरियो लिथोग्राफी 4D टेक्निक. एंड मटेरियल एफिशिएंसी क्यों है? बिकॉज इट रिड्यूसेस वेस्टेज. देन एप्लीकेशंस में मेडिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? ड्रग डिलीवरी, टिश्यू फैब्रिकेशन एंड ऑर्गन रीजनरेशन. Then soft robotics due to its flexibility, deformability with respect to environment. Then aerospace में भी काम आ जाएगा. For example, nitinol alloy manufacturing. So by enabling low cost, durable parts that adapt to extreme conditions. Then there are other applications also you can see. So 4D printing advances 3D printing by enabling dynamic functionality, continued material innovation and broader adoption. So these are crucial for unlocking its full potential. अब हमने IT, कंप्यूटर्स एंड रोबोटिक्स के बारे में देख लिया है. बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में देख लिया है. नाउ कम्स स्पेस. अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस टॉपिक इज़ वेरी वास्ट एंड कंटेम्प्रेरी. तो किसी भी करंट अफेयर सोर्स से ही करना बेटर रहेगा, फॉर विच आई विल बी यूजिंग मेंस 365. बट अगर हम स्टैटिक कंटेंट की बात करें तो वो ये है: $8.4 billion US dollars, accounting for 2% of the global space market. It has contributed 20,000 crores to the GDP in the last decade and supported 96,000 jobs. इसका significance क्या है? National security through self-reliance. For example, Navik, that is navigation with Indian constellation. So it is India's regional navigation system. Then socio-economic benefits. फॉर एग्जाम्पल लैंड डिजिटाइजेशन, जैसे कि स्वामित्व स्कीम के बारे में हमने सुना है. सो इट लेवरेजेस सैटेलाइट्स फॉर ट्रांसपेरेंट लैंड रिकॉर्ड्स. देन स्पेस डिप्लोमेसी, एग्जाम्पल साउथ एशिया सैटेलाइट प्रोजेक्ट. देन निसार बाय नासा एंड जॉइंटली बाय नासा एंड इसरो. देन साइंटिफिक रिसर्च, एग्जाम्पल चंद्रयान 3 परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑन विज्ञान लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर. In space situational awareness, for example, ISRO released Indian Space Situational Assessment Report for 2024, declaration of debris-free space mission to be achieved by all Indian space actors. Then it is also useful in Earth observation. For example, it is used in early warning systems, environmental impact monitoring, etc. Then how has ISRO achieved so many achievements despite having less resources? So इसके अंदर हम पॉइंट्स लिख सकते हैं. फर्स्ट इज विजनरी लीडरशिप. फॉर एग्जाम्पल विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम,
emphasized on bottoms up approach to larger initiatives. Then cost effective missions, for example जो हमारा मंगलयान था मॉम, its cost was estimated to be $74 million. On the other hand, NASA का जो मेविन मिशन था on similar lines, it had a budget of $670 million. Then indigenous technology development, example 95% of the space component in Indian rockets are indigenous. Then partnerships and collab, for example Trishna is a collab between French space agency, that is CNES, and ISRO. Then ISRO also launched PSLV C-59 rocket with the European space agencies Proba 3 satellites. Then engaging private players, so there are more than 500 companies that partner with ISRO for providing materials, mechanical fabrication and electronic fabrication, etc. Now what are the challenges? Dependence on import. India heavily relies on imported components like semiconductors and carbon fibers that are useful in space materials. Then increasing commercial competition. The global space industry is becoming increasingly commercialized with private companies entering the sector. And standardization and quality assurance. Absence of an Indian space quality standards leads to inconsistencies and reduced trust in domestically produced components. Then infrastructure constraint. Due to absence of advanced testing and launch facilities accessible to private companies. Then workforce shortage is also there. Then here are some key future missions. For example Chandrayaan, ये सारा मैंने मेंस 365 से ही उठाया है. First is Chandrayaan 4. So it will bring the rock and soil samples back to Earth. Gaganyaan mission क्या है? Human space flight capability by launching crew of 3 members to an orbit and bring them back safely. Then Shukrayaan, which is also called Venus Orbiter mission, to study the atmosphere of Venus. Then Mangalyaan 2, India's second interplanetary mission to Mars. Then Bharatiya Antariksh Station, a planned space station that would maintain an orbit of approximately 400 kilometers above Earth, where astronauts could stay for 15-20 days. Then Lunar Polar Exploration Mission in collaboration with JAXA to explore the moon's south pole region. Now privatization in Indian space sector. Over the next 5 years, the Indian space economy is expected to grow at a CAGR. CAGR is compound annual growth rate of 48%, potentially reaching a $50 billion valuation. Target is to increase India's share in global commercial space economy to 10% by 2030. Currently it stands at 2%. So need for promoting private sector. It will reduce import dependency. India's import cost in the space technology sector are 12 times higher than the earnings from the export. This was in 2022. Then it will free the ISRO from ancillary activities. The space entrepreneurship could free up ISRO to focus on the core areas of research and development. In global competitiveness, foreign private companies like SpaceX, Blue Origin, they have transformed the global space industry by cutting costs and turnaround times. For example, Elon Musk का हमने देखा है SpaceX में रॉकेट वापस आके लैंड करता है by finding innovative solutions to pressing challenges in the areas such as agriculture, disaster management or communication. Then it will also lead to employment generation. Initiatives to encourage private sector. First is InSpace. It is an autonomous agency under the Department of Space to encourage private sector in space. Then 1,000 crore venture capital fund for space sector under the aegis of InSpace only. Then NSIL, New Space India Limited. It is a Schedule A category company under DOS. DOS is Department of Space. So it was set up in 2019 to handle commercial activities of ISRO. Then Indian Space Policy 2023 enables end-to-end participation of non-government entities in all domains of space activities. Then FDI up to 100% under automatic route for manufacturing components and systems. Subsystems for satellites, ground segment and user segment. Then challenges क्या हैं? Multiplicity of regulations. Example, approvals needed from departments of space, then from ISRO, then from Antrix Corporation, etc.
Then risky nature of the industry, absence of customized insurance products for startups, especially in deep tech and space industries. Then limited access to launch facilities. Access to launch facilities and infrastructure is primarily controlled by government agencies like ISRO, so it can be challenging for private player. Technological competence, developing cutting edge space technology and expertise is costly and time intensive. सो ये इसका वे फॉरवर्ड है, आप पॉज करके देख सकते हैं. तो हमने इसका स्टैटिक कंटेंट देख लिया है. नाउ एक्सियोम 4 मिशन क्या है, ये सब न्यूज़ में है. बेसिकली जो अभी न्यूज़ में था, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड 3 अदर एस्ट्रोनॉट्स, सो जो ऊपर गए थे स्पेस में, सो दैट वाज एक्सियोम 4 मिशन. It was in collaboration with NASA and SpaceX. So they basically went to the International Space Station. So what was its significance for India? Basically, it will help in development of Gaganyaan mission, and it will also help in development of India's space ecosystem. Then obviously national pride and inspiration. The space docking experiment was also in news. ISRO successfully demonstrated the docking and undocking of 2 small satellites in orbit under SpaceX, which is space docking experiment. Now what is its significance? So it will be essential for India's space ambitions, for example Bharatiya Antariksh Station, then sample return from moon, etc. Then satellite servicing and maintenance. Docking will allow for servicing and refueling of satellite, extending their operational life. Then it will also act as a support for future space missions. For example, it will be helpful when multiple rocket launches are required to achieve common mission objectives. Then other significance such as use in future applications such as in space robotics, help in natural resource monitoring, vegetation studies, etc. Then engine technology में scramjet engine and CE20 cryogenic engine. सो इनके बारे में शॉर्ट नोट्स हम बना सकते हैं. मैंने इसलिए नहीं किया है बिकॉज सी जो स्पेस वाला जो हमारा हेडिंग है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, एंड इसमें से क्या हिट करता है, इनफैक्ट इससे क्वेश्चन भी आता है कि नहीं आता है, सो ये भी देखना पड़ेगा. बट ये कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे कि मैंने जो बेसिक बताया था स्टैटिक वाला पार्ट, जो डेटा पॉइंट्स थे, देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस, ये सब हॉट टॉपिक हैं. सो बिकॉज ये सब मतलब स्टार्टिंग ही मान लो इनको, तो इसीलिए वो मैंने वहाँ पे लिख दिया था. नाउ दीज थिंग्स, इसमें से ज़रूरी नहीं कि हर साल स्पेस के अंडर से क्वेश्चन ही आ रहा है. इस लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया था. सो इसको बहुत ज़्यादा करना वीडियो की लेंथ बढ़ाएगा, एंड बट आई विल मेक श्योर कि मैं इसके हाफ पेज नोट्स बना लूँ. सो आप भी बना सकते हैं. सो इंजन टेक्नोलॉजी में स्क्रैमजेट इंजन है न्यूज़ में, CE20 क्रायोजेनिक इंजन है. देन आदित्य L1 इस बार आने के भी चांसेस, काफ़ी लोग बोल रहे थे मेंस में है, आएगा बट आया नहीं था. सो इट कैन मे बी कम इन नेक्स्ट ईयर, आदित्य L1. देन आउटर स्पेस गवर्नेंस इज़ अ हॉट टॉपिक, इसलिए क्योंकि नॉर्वे हैज़ बिकम 55th नेशन टू जॉइन नासाज आर्मिटिस अकॉर्ड फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन. सो बेसिकली ये आउटर स्पेस गवर्नेंस के अंडर में आ जाएगा. देन स्पेस डेब्री इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक. इसमें जो इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल DFSM, दैट इज़ डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन 2030. देन ISRO सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेटिंग मैनेजमेंट एंड लाइकवाइज. एंड व्हाट आर द इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स, फॉर एग्जांपल इंटर एजेंसी डेब्री कोऑर्डिनेशन कमिटी established in 1993. And then Zero Debris Charter signed by 12 countries, for example Austria, Belgium, Cyprus, etc. So ये भी, इसके बारे में भी हाफ पेज नोट बना लीजिएगा. Then नाविक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 बार आई थिंक आया है. नाविक इज़ बेसिकली जो IRNSS है, दैट इज़ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाविक, डेवलप्ड बाय ISRO, providing precise real-time positioning, navigation and timing services for users in India and a region extending 1500 kilometers around it. Now let's see इनसे questions कैसे आते हैं. Awareness in the fields of IT, space, computers and robotics. Nanotech and biotech हमने previous 2 parts में किया हुआ है. So first question is on asteroid. It was asked in 2024. So उस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था.
बिकॉज नासा के काफ़ी सारे मिशंस एस्ट्रॉयड की तरफ टारगेटेड थे, जैसे कि ओसिरिस रेक्स, देन डार्ट, जिसमें एस्ट्रॉयड को ब्लास्ट किया था डिफेंस स्ट्रैटेजी के तौर पे। देन सेकंड क्वेश्चन इज़ ऑन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। सो उस टाइम पे ये करंट न्यूज़ थी, सो 2024 में क्वेश्चन आ गया इस पे। देन जेम्स वेब टेलीस्कोप पे क्वेश्चन है। देन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, दिस ऑल इज गिवन इन द मेंस 365 and other current affair sources of various coachings. Now Juno mission of NASA, so ये 2017 में पूछा है, because 2016 में it was launched in 2011 but it entered into the orbit of Jupiter in 2016, so that time it was very important from this current point of view, so इसलिए इस पे क्वेश्चन आया है। देन सेवेंथ क्वेश्चन, आई डोंट नो मैंने यहाँ पे क्यों डाला हुआ है, बट आई डोंट थिंक इट्स रिलेटेड टू anything like that. It is related to basically R&D. So ऐसे questions भी आते हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। देन एट्थ क्वेश्चन इज़ ऑन 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो कि हमने किया हुआ है। देन FRP was asked in 2013. Then again in 2013 DRS was asked, umpire decision review in cricket. So like this जो फेमस टेक्नोलॉजी उस टाइम पे पहली बार आई थिंक साइंस एंड टेक इंट्रोड्यूस हुआ था यूपीएससी में, तो जो भी फेमस टेक्नोलॉजी उस टाइम पे न्यूज़ में थी उन्होंने पूछ लिया ऐसे करके। नाउ 11th क्वेश्चन इज़ ऑन जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है तो उसको रोबोट्स कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बेसिकली रोबोटिक्स पे। सो इनको मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, इनको बस मैंने दिखाया है सो दैट वी कैन सी क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दे आर करंट बेस्ड एंड कंटेम्प्रेरी। देन नैनोटेक एंड बायोटेक ऐसी चीज़ है जो कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में अच्छे से किया हुआ है, बहुत अच्छे से। ना उसमें दूसरा टॉपिक था इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा हुआ था। बट इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी काफ़ी सारे स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे 2023 में क्वेश्चन आया था थर्ड मून मिशन से, क्योंकि बिकॉज चंद्रयान 3 उस टाइम पे गया हुआ था, तो बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था। लिस्ट द कंट्रीज दैट हैव अचीव्ड दिस टास्क, देन इंट्रोड्यूस द सब सिस्टम्स इन द एयरक्राफ्ट लॉन्च्ड एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ वर्चुअल लॉन्च कंट्रोल, सो एक्सेट्रा। Then what is India's plan to have its own space station, that is Bharatiya Antariksh Station. So we have seen it, and we have discussed that we should prepare at least half page notes out of it. अगर क्वेश्चन आता है तो we'll be able to do it. Then IRNSS, जिसको हम जानते हैं नाविक से, इस पे क्वेश्चन आया है। Then 7th क्वेश्चन मैन्ड स्पेस मिशन से, जैसे कि चंद्रयान थे, दे हैव अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेसेस बट इंडिया इज़ नॉट वेंचर्ड इनटू मैन्ड स्पेस मिशन। ये क्वेश्चन आया 2017 से, जब ये सब बात नहीं हो रही थी। नाउ गगनयान की बात हो रही है, तो इट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन 9th क्वेश्चन अगेन IRNSS पे आया है एंड GPS पे। GPS इज़ बेसिकली एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ नाविक, नाविक दैट इज़ IRNSS। तो इसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम्स एंड प्रोटेक्शन पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये भी जब हम IRNSS या फिर नाविक करेंगे तो इसमें आ जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको अच्छे से करना पड़ेगा अपने को। नाउ इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड जस्ट डिस्कस द PYQs ऑफ इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो पहला क्वेश्चन था हाउ इज़ द गवर्नमेंट, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक। सो पहला क्वेश्चन था हाउ इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग the traditional knowledge of medicine from patenting by pharmaceutical companies. Then TKDL, that is traditional knowledge digital library, इसके बारे में क्वेश्चन था। Then globalized world, intellectual property right assume significance and are a source of litigation. So इसमें basically difference पूछा था between copyrights, patent and trade secrets. Then fourth question 2013 में पूछा था, it was related to evergreening of patent, basically Novartis patent application for Glivec. So we'll be seeing all this. Now what is IPR? IPR is intellectual property rights. These are the legal rights granted to creators and inventors to protect their innovations, design and artistic works and invention from unauthorized use. इसके टाइप्स क्या होते हैं?
So basically, broadly, they are classified into 6 types. First is copyright. Copyright किस लिए होता है? For literary and artistic works. इसमें ड्यूरेशन कितना होता है? सो लाइफ प्लस 60 ईयर्स. पेटेंट क्या होता है? सो पेटेंट इज़ यूजुअली फॉर इन्वेंशंस, फॉर एग्जांपल ड्रग्स, मशीन्स. इसका टाइम पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन 20 ईयर्स. देन ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? दैट इज़ फॉर कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल कोको कोला का फार्मूला हो गया, एक्सेट्रा. देन ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स सिम्बल्स, लोगोज, नेम्स और स्लोगन्स यूज्ड बाय बिजनेसेस. फॉर एग्जांपल नाइक्स सूश एंड एप्पल का एप्पल हो गया, कटा हुआ सेब. देन डिज़ाइन राइट्स क्या हो गए? प्रोटेक्ट्स द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट, इट्स शेप, कॉन्फ़िगरेशन और कलर. फॉर एग्जांपल फर्नीचर, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन. Then geographical indications, they protect products that have a specific geographical origin and processes qualities or reputation due to that origin. For example, Darjeeling tea, Kashmiri saffron, etc. तो जैसे कि हमने एक PYQ देखा था, उसमें डिफरेंस पूछा था बिटवीन कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेड सीक्रेट. सो यहाँ से हम देख सकते हैं. सो बेसिकली इन सब के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं. सो इसको पॉज करके देख लेना. तो जैसे कि इसमें ग्लोबल रिजीम कौन सी है? तो कॉपीराइट में बर्न कन्वेंशन है ग्लोबली. देन पेटेंट में ट्रिप्स है. देन ट्रेड सीक्रेट में ट्रिप्स एक्ट आर्टिकल 39 है. देन इसमें गवर्निंग लॉ हैं, जैसे कि कॉपीराइट में कॉपीराइट्स एक्ट 1957, देन पेटेंट एक्ट 1970, देन ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999. सो लाइकवाइज you can see it from here. Then one thing more, that India amended its patent law in 2005 to comply with the TRIPS agreement and introduced product patents for pharmaceutical. So this put a break on evergreening of patent. So basically it introduced section 3D. So evergreening of patent क्या होता है? Basically refers to a practice where pharmaceutical companies make small modifications to an existing drug or compound to obtain a new patent. This is used to extend the exclusivity period of the drug, effectively preventing generic competition and maintaining market dominance. For example, Novartis Gleevec case, जैसे जो क्वेश्चन भी आया था PYQs में. बेसिकली पेटेंट का ड्यूरेशन क्या होता है? 20 ईयर्स होता है. तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास किसी चीज़ का पेटेंट है, सो इट विल बी ओनली वैलिड फॉर 20 ईयर्स. आफ्टर 20 ईयर्स एनीबडी कैन हैव एंड एनीबडी कैन मेक दैट ड्रग और मेडिसिन. तो वो लोग क्या करते हैं? मेडिसिन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, एकदम हल्का सा, विदाउट अफेक्टिंग इट्स क्वालिटीज़, या फिर विदाउट अफेक्टिंग इट्स जो वो काम कर रही है, चेंज कर देंगे एंड तो वो पेटेंट वापस 20 साल के लिए बन गया. नोबडी अगेन कैन यूज़ दैट. नाउ व्हाट इज़ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी? Basically TKDL initiative. So TKDL initiative is a database documenting India's ancient traditional knowledge, especially in Ayurveda, Unani, Siddha and Yoga. It is a collaborative project between CSIR and Ministry of Ayush. So why it was introduced? Due to lack of accessibility of Indian traditional knowledge in the patent examination process, it was primarily due to language barriers, as the traditional knowledge existed in local languages like Sanskrit, Tamil, Arabic and Persian, etc. So TKDL translates and presents traditional knowledge in English, French, Spanish, German and Japanese using a patent application format that is easily comprehensible to patent examiners. Now इसके achievements क्या क्या हैं? So इसके achievements हैं कि it prevents biopiracy by providing prior art evidence in patent claims globally. So इसके अचीवमेंट हम गिना सकते हैं कुछ एक दो, जैसे कि फर्स्ट इज कोलगेट पाम ऑलिव बिड टू पेटेंट नटमेग माउथ वॉश. सो इट वॉज रिजेक्टेड. नटमेग माउथ वॉश हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें बहुत पहले से मौजूद है. सो इट वॉज रिजेक्टेड. देन पैंजिया लैब, बेसिकली उन्होंने एक हेयर लॉस फॉर्मूला बनाया था पाइन बार्क एंड ग्रीन टी से एज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. सो दैट ऑल्सो गॉट रिजेक्टेड बिकॉज वो भी हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो बुक्स हैं आयुर्वेदा में, उसमें मौजूद है. TKDL इनिशिएटिव में हमारे 1500
योगा आसन्स लिस्टेड हैं, ताकि कोई दूसरा ये मत बोल दे कि भाई ये तो मैंने बनाया है, ये आसन मैंने बनाया है, और कोई दूसरा नाम दे दिया उसको. देन सक्सेस इन अराउंड 200 केसेस विदाउट एनी कॉस्ट. हमें कोई कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ी, एंड हमारे 200 केसेस में हमें विन विन सिचुएशन मिल गई. सो दीज वर द अचीवमेंट्स ऑफ TKDL इनिशिएटिव. ना इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं. TKDL के मतलब एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं. सो इसको हमने 3 डायमेंशन में बांट दिया है. गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. देन इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. देन फार्मा एंड बायोटेक इंडस्ट्रीज़ की तरफ से की नज़र से प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. तो पहले गवर्नमेंट का देखते हैं. गवर्नमेंट का प्रोज एंड कॉन्स. प्रोज क्या हो गए. फर्स्ट इज़ इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज. देन सेकेंड क्या हो गया. ओपन एक्सेस टू ट्रेडिशनल नॉलेज कैन एनहांस इंडियाज इमेज एज responsible custodian, then as a leader in protecting its indigenous resources. Then third is collab and partnerships for further R&D in traditional medicine. R&D is basically research and development. Then cons क्या हो गए. There is a scope of potential misuse, for example unauthorized usage. Then commercial exploitation का भी एक खतरा है. Then other cons are legal complexities, फॉर एग्जाम्पल ओनरशिप एंड कॉपीराइट क्लेम्स रिलेटेड डिस्प्यूट. अब क्योंकि ये ट्रेडिशनल नॉलेज एक ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दिया गया है, सो वेरियस ग्रुप्स हैव क्लेम्ड इन इंडिया ओनली कि ये हमारे शास्त्र से है, ये हमारे शास्त्र से है. इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोज क्या हो गए. फर्स्ट इज़ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल एंशियंट हीलिंग प्रैक्टिसेस. देन रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को मिल रहा है. ओपन सोर्स लाइसेंसिंग एक्नॉलेजेस देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन. देन कॉन्स क्या हो गए. कल्चरल अप्रोप्रिएशन इफ ट्रेडिशनल नॉलेज अडॉप्टेड विदाउट प्रॉपर रिकग्निशन और कॉम्पनसेशन. देन सेकेंड क्या हो गया इसका. मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस यूज आउटसाइड इट्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. देन फार्मा एंड बायोटेक इंडस्ट्रीज़ की तरफ से प्रोज क्या हो गए. सो द फर्स्ट इज़ R&D. So basically they can use this knowledge for drug discovery and development. And second, avoiding patent infringement inadvertently without intent. Then cons क्या हैं. First is reduced exclusivity, limiting potential for IPR and commercial gains. क्योंकि काफ़ी सारा जो हमारा नॉलेज था वो ऑलरेडी पेटेंट उसका कर लिया गया है, सो उनके जो कंपनीज़ हैं उनके लिए स्कोप काफ़ी कम बच जाता है. एग्जाम्पल में कोलगेट, पाम ऑलिव, देन पैंजिया, जिन्होंने मतलब कुछ हेयर फॉल सोल्यूशन बनाने की कोशिश किया, दवाई बनाने की कोशिश की, उसका पेटेंट कराने गए तो पता चला कि ये चीज़ ऑलरेडी बनी हुई थी हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में. देन सेकेंड कैन बी राइवल कंपनीज में एक्सेस TKDL इंफॉर्मेशन, रिड्यूसिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर अर्ली अडॉप्टर्स. देन इंडिया एंड ग्लोबल IPR regime. सो ग्लोबल क्या हो गया. WTO. So India is a member of WTO and it adheres to TRIPS agreement, which sets minimum standards for IPR protection and enforcement. Then WIPO. WIPO is World Intellectual Property Organization. So India is a member of this organization too. It promotes, protects IPR worldwide. और इसके अंडर में कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ कन्वेंशन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुडापेस्ट ट्रीटी एंड बर्न कन्वेंशन. नाउ नेशनल अगर हम देखें, सो इन इंडिया ऑल्सो वी हैव अ नेशनल IPR पॉलिसी which was introduced in 2016 as a guiding vision for development of IPRs in India. So the focus here is on fostering a creative India and innovative India through a comprehensive approach that integrates all forms of intellectual property and relevant statutes. Now DPIIT under Commerce Ministry is responsible for coordinating and implementing IPR in India. नाउ ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स हम यहाँ से देखेंगे. ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए. IPR अवेयरनेस, आउटरीच एंड प्रमोशन. देन जनरेशन ऑफ IPRs. देन लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, establishment of robust and balanced laws. Then administration and management में ease हो जाएगी. Then commercialization of IPRs, for example it will enhance value and utilization. Then enforcement and adjudication. This will strengthen mechanisms to combat infringements.
Then human capital development, training, R&D and skill building. Then achievements क्या हो गए? Improved GII ranking. GII is Global Innovation Index. फॉर एग्जाम्पल 2015 में हमारी 81 रैंक थी, इन 2025 में 38th रैंक हो गई है. सो स्ट्रेंथेंड institutional mechanism, then reduced dependency due to augmentation of technical manpower and introduction of electronically generated certificates. Then number 4, increased patent and trademark filings. Number 5, streamlined processes. Number 6, technology and innovation support centers. Now issues related to IPR in India क्या हैं? Inadequate attention given to इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइनेंसिंग इकोसिस्टम, मतलब फाइनेंसिंग इकोसिस्टम को अटेंशन ज़्यादा नहीं दी जा रही है. सेकेंड, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड कंप्लायंस लीड्स टू फ्रीक्वेंट वायलेशन एंड डिसरिगार्ड फॉर IPR लॉज. देन डेटा एक्सक्लूसिविटी, जो कि हमने बेसिकली कॉन्स में देखा था. फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड MNCs आर्ग्यू दैट इंडियन लॉ लैक्स protection against unfair commercial use of data submitted for market approval of pharmaceutical and agrochemical products. Then weak Copyright Act enforcement leading to widespread piracy. Then Section 3D, जो कि evergreening of patent में था, for Indian Patent Act, this restricts granting of patent unless they exhibit significant differences in efficacy. Then majority 64% of the patents filed in India are by non-resident और फॉरेन एंटिटीज़. देन R&D एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ कितना है? 0.64 और 0.7% ऑफ GDP, एंड दैट टू इज़ प्राइमरली कंसनट्रेटेड इन द पब्लिक एंड एजुकेशन सेक्टर. देन इंक्रीजिंग थ्रेट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स, काउंटरफीटिंग एंड पायरेसी. देन बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं. allows entities to use or sell patented invention without consent under certain condition. So this has raised concern among the foreign investors, impacting India EU FTA negotiations. So we can see all this. So हमने issues भी देख लिया. Now इसका way forward क्या हो जाएगा? Conduct comprehensive study on the economic benefit of improving IPR ecosystem. Focus on R&D, increased spending in both public and private sector. Then very important, number 3, foster industry academia partnerships for research and innovations. Then we can also write that establishment of exclusive apex level institution for development of IPR. Then enhance enforcement and adjudication of IP crimes, etc. Then IP audits भी करवा सकते हैं to assess the potential in specific sectors. So that's all from the IPR. Now if we look at the PYQs, ये number 4 अगर हम देखें, so evergreening of patent पे question था, तो I hope we can answer this from this all content. Then copyright, then third question basically copyright, patent and trade secret में difference था. So अगर बाकी किसी भी आया तो मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं. Then second question is on TKDL. So इसके बारे में हमने vividly देख लिया है. Then how is government of India protecting traditional knowledge of medicine by patenting by pharmaceutical companies? So इसमें भी TKDL काम आ जाएगा, and we can mention the examples also, that Colgate Palmolive and Pangea जो hair loss solution बनाया था उन्होंने. Then we can mention about the national IPR policy also, which was introduced in 2016. So उसके objectives क्या थे, उसके achievements क्या थे. So इसके भी values भी हमने देख लिए अच्छे से. So thank you.